हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम। अब इस एंजाइम में सबसे पहला बात जो है वो है एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रोसेस को प्रोहिबिट करने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो आते हैं उसका नाम है इनहिबिटर। एक मॉलिक्यूल होगा और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रुकावट पैदा करेगा। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। जिस प्रोसेस के थ्रू ये रुकावट पैदा करता है इसका नाम है इनहिबिशन और जो रुकावट पैदा करता है उसका नाम है, उस मॉलिक्यूल का नाम है इनहिबिटर। ये ड्रग हो सकता है, ये मेडिसिन के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक इनहिबिटर एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में या प्रोडक्ट फॉर्मेशन में एक प्रिवेंटिव रोल प्ले करेगा, कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में एक रुकावट पैदा करेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना है कि एंजाइम इनहिबिशन कितना टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो बात है कि एक एंजाइम का जो इनहिबिशन प्रोसेस है इसको सबसे पहले क्लासिफाई किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लासिफाई एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस को दोनों ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ reversibility. On the basis of reversibility, the enzyme inhibition can be classified in two groups: reversible inhibition and irreversible inhibition. रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस the enzymatic inhibition can be classified in three groups: competitive inhibition, uncompetitive inhibition, another is non-competitive inhibition. So first of all we consider about the reversible inhibition. When inhibitor bind with enzyme through non-covalent bond, then it's known as reversible inhibition. When inhibitor binds with enzyme through covalent bond, that means it's called irreversible inhibition. During the reversible inhibition, the conformational changes does not occur
in case of the irreversible inhibition, they prohibit, the inhibitor strictly prohibit the enzyme substrate formation. During the reversible inhibition, the inhibitor bind with enzyme through loose bond because the non-covalent bond. But here during the irreversible inhibition, when inhibitor bind with enzyme, very strong bond will be formed. So it's a comparison between the reversible inhibition and irreversible inhibition. Next come to the competitive inhibition. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स क्या है कि एक नॉर्मल सा प्रोसेस क्या है, एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तब जाके बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इस जगह से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है. मगर इस जगह पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के जगह पे इनहिबिटर बाइंड कर गया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, तब जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा. सो ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द एंजाइम inhibitor binds with free enzyme and form enzyme inhibition complex, and when form the enzyme inhibition complex, it's strictly prohibit the formation of enzyme substrate complex also and product also. In case of the uncompetitive inhibition means when enzyme bind with substrate and form enzyme substrate complex plus free and it's converting to the free enzyme plus product. Here you generally seen that enzyme bind with inhibitor, that means inhibitor bind with free enzyme and form enzyme inhibitor complex. After that substrate will be bind and form enzyme inhibitor substrate complex. Similarly, enzyme when binds with substrate and form enzyme substrate complex, then also inhibitor bind with this enzyme substrate complex and form enzyme inhibition substrate complex or enzyme substrate inhibition complex. In case of the non-competitive inhibition, here similarly enzyme plus substrate binds and form enzyme substrate complex, and after that it convert into the free enzyme plus product also. But here same thing happen, the inhibitor binds with enzyme substrate complex, not free enzyme, and enzyme substrate inhibition will be formed. Here during in case of the non-competitive inhibition, the inhibitor does not bind with the free enzyme. It's a most and major important thing. The inhibitor does not bind with the free enzyme. It's just only bind with the enzyme substrate complex when formed. Then it will bind with the enzyme substrate complex and form enzyme substrate inhibitor complex. That means during the competitive inhibition the inhibitor binds with free enzyme and it's strictly prohibit the enzyme substrate complex as well as enzyme product formation also. In case of the uncompetitive inhibition, enzyme bind with inhibitor and form enzyme inhibitor complex, and it's similarly bind after enzyme inhibitor complex it will bind with substrate and form enzyme inhibition substrate complex or enzyme substrate inhibition complex. And in case of the non-competitive inhibition, the inhibitor does not bind with the free enzyme. It's only bind when enzyme plus substrate react and form enzyme substrate complex. Then
this enzyme inhibitor binds with enzyme substrate complex and form enzyme substrate inhibition complex. So here one of the major important thing is that the substrate concentration is depend on the binding of the inhibitor, because the substrate concentration when high, that means this high concentration of the substrate always induce the binding of the inhibitor. When the substrate concentration is very low, then inhibitor binds, the chances of the binding rate is very less. In case of the competitive inhibitor, enzyme does not bind with the enzyme substrate complex, it's bind one and only the free enzyme and form enzyme inhibition complex, and here enzyme substrate complex does not form. So it's a general classification on the basis of competitiveness. In case of the reversibility, two type, reversible inhibition and irreversible inhibition. During the reversible inhibition, non-covalent bond will be formed. In case of the irreversible inhibition, the covalent bond will be formed, and no conformational changes occur in case of the reversible inhibition. Enzymatic activity, the conformational change of the enzyme does not occur in reversible inhibition. In case of the irreversible inhibition, the conformational change may occur, and here the covalent bond is strong rather than the non-covalent bond. तो आज का जो डिस्कशन था वो इतना ही था. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जाके आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.